देयर आर सेवरल ग्रोथ मॉडल्स, बहुत से ग्रोथ मॉडल्स हैं, लेकिन सोलो ग्रोथ मॉडल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर ग्रोथ मॉडल, पहला प्रॉपर ग्रोथ मॉडल था। या इससे पहले जो हैरोडोमर मॉडल था वो एक ग्रोथ मॉडल था, लेकिन हैरोडोमर मॉडल को बेसिक सही एक मॉडल कंसीडर किया जाता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। ऑल्दो के बहुत से एस्पेक्ट्स जो थे वो सोलो ग्रोथ मॉडल के भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे। इसकी बजाय हैरोडोमर मॉडल था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसने दिए, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोडक्शन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स थे, लाइक हैरोडोमर मॉडल के अंदर जो एक बेसिक प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एट सम इक्विलिब्रियम जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के ऊपर चले जाती है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद इकोनॉमी जो है वो अगर अपने इक्विलिब्रियम से, या जिसे रेजर एज इक्विलिब्रियम कहते हैं या नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस इक्विलिब्रियम से अगर हट जाती है तो वो इकोनॉमी कैन नेवर रिटर्न बैक टू द इक्विलिब्रियम, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि उस इकोनॉमी की कन्वर्जेंस फिर पॉसिबल नहीं होती। इकोनॉमी दोबारा कन्वर्ज नहीं कर सकती अपने इक्विलिब्रियम की तरफ या अपने ग्रोथ पाथ की तरफ। सो सोलो ग्रोथ मॉडल वाज द फर्स्ट मॉडल जिसने एक तो प्रोडक्शन फंक्शन को इस्तेमाल किया, न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को किसी ग्रोथ मॉडल के लिए इस्तेमाल किया, फिर using the properties of new classical production function उन problems को address किया which were in the which were found in the Harrod-Dummer model. So हम solo growth model को start करते हैं. Before solo growth model we can have a discussion, although we can have a discussion on the types of growth models and the history of growth models and everything, but I want to directly jump to the सोलो ग्रोथ मॉडल, फिर वो साइड बाय साइड हिस्ट्री हम बताते जाएंगे। 1955 के अंदर सोलो ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया और 1956 के अंदर स्वान ने इसी किस्म के साथ मिलता जुलता जो है वो ग्रोथ मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन बेसिकली सोलो को ही इसका क्रेडिट जाता है, सोलो का ही नाम ज़्यादा लिया जाता है, ऑल्दो कई बुक्स में इसको सोलो-स्वान ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इनके बेसिक्स सेम हैं, इनकी आप कह लें कि जो conclusions and implications and they all are same, but the credit goes to Solow. Why? Because Solow gets it published 1 year before Swan. Swan ने इसको 1956 में पब्लिश करवाया, जबकि सोलो ने इसको 1955 में ही पब्लिश करवा दिया था। So that is the reason कि जिसने पहले से पब्लिश करवाया है उसको क्रेडिट इसका मिलता है। So सोलो ग्रोथ मॉडल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो that is based on the new classical school of thought. न्यू क्लासिकल के स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर इसकी बुनियाद है, और इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका है उसमें फर्म्स का रोल है, और फर्म्स का रोल ये है कि वो प्रोडक्शन करती हैं एंड देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स वो उन गुड्स की सप्लाई करते हैं और उनको सेल करते हैं, and they also hire the inputs. These are the very basic structure of any economy. Then the role of households is that they are the households are the owners of inputs like labor and capital. यहाँ पे हम सिर्फ labor and capital की बात करेंगे। तो household जो होता है वो ऑनर होता है इनपुट्स का, which is labor and capital, और जो हाउस होल्ड उसके बाद डिमांड करता है गुड्स ऑफ इनपुट को डेफिनेटली सेल आउट करता है इनपुट्स को, एंड दे आर आल्सो डिमांड द आउटपुट्स जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस किए होते हैं। उनकी प्रोडक्शन जो फर्म की होती है उसकी प्रोडक्शन को हाउस होल्ड जो है वो परचेज करते हैं। देन देयर कम्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड आई सेड के सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर जो न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो दे आर द लेबर एंड देन कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल जो है वो दो इनपुट फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में, और इस मॉडल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। एंड देन देयर इज आउटपुट, पर उस बेस्ड ऑन दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर इज आउटपुट, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद के ऊपर उनको इस्तेमाल करते हुए आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है। And in this model, technology is kept constant or kept given. Exogenous model, exogenous
फैक्टर होती है टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट द वेरिएबल फैक्टर। सो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आ जाती है। बाय द वे इस मॉडल को जो है इसके फीचर्स की बुनियाद के ऊपर और इसके assumptions की बुनियाद के ऊपर इस मॉडल को exogenous growth model कहा जाता है। We have plenty of exogenous growth models and the endogenous growth models। हमारे पास जो है वो there are many exogenous growth models and the endogenous growth models, and you could say that in the class of exogenous growth models, Solow growth model can be considered the first one। So अगर तो I think personally, मैं personally ये सोचता हूँ कि अगर दो मॉडल्स ठीक तरीके से विद ऑल ऑफ देयर मैथमेटिकल डेरिवेशंस इक्वेशंस एंड एवरीथिंग पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं वो सारे इन दोनों मॉडल्स के ऊपर ही बेस करते हैं। वन मॉडल इज डेफिनेटली सोलो ग्रोथ मॉडल। बाकी जो बाद में आने वाले एग्जोजेनस ग्रोथ मॉडल्स थे वो सोलो ग्रोथ मॉडल्स की ही डिफरेंट एक्सटेंशंस थी, छोटी छोटी वेरिएशंस के साथ में एक्सटेंड किया गया उनको। और इसके अलावा इसके बाद आने वाला एक मॉडल है विच इज कॉल्ड रैमजे मॉडल। एक रैमजे मॉडल कहलाता है, एंड रैमजे मॉडल जो है दैट इज दैट यू कुड से ट्रेंड सेटिंग मॉडल, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो इंटेलेक्चुअली और थ्योरेटिकल प्रोग्रेस के हवाले से रैमजे मॉडल की वजह से इंश्योर हुई। सो रैमजे मॉडल इज अनदर मॉडल जो मेरा ख्याल है कि अगर आप उस रैमजे मॉडल को ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से रैमजे मॉडल को कर लेते हैं, उसकी इक्वेशंस को, उसकी बेसिक फ्रेमवर्क को, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को, तो देन ये दो मॉडल्स हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉन्ग रन ग्रोथ के अंदर, या ग्रोथ मॉडल्स के अंदर। इसमें जो फीचर्स हैं प्रोडक्शन फंक्शन के वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें हम ये जानते हैं कि जो टाइम होता है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी प्रोडक्शन फंक्शन। टाइम जो होता है वो किसी प्रोडक्शन फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, रादर टाइम जो है वो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है यूजिंग सम वेरिएबल्स। लाइक हम ये कह सकते हैं कि लेबर और द कैपिटल और आउटपुट दे आर बेस्ड ऑन टाइम। उनके अंदर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंजेस आती हैं। लेबर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैपिटल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आउटपुट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें टाइम के ऊपर बेस कर रही होती हैं। लिहाजा हमें इस तरह लिखना पड़ता है प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे हम लिखते हैं कि y is further based on time, y is changing with respect to time as well, so that is why we have written yt. F, that is for the production function, capital is the function of t, labor is the function of t, and then the technology is the function of t. So this is how we include time indirectly in the production function. टेक्नोलॉजी जो है वो मल्टीप्लिकेटिवली इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड की जाती है इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, एज इट इज मल्टीप्लाई बाय लेबर। सो आप यूं कह लें कि ये टीएल इज द इफेक्टिव लेबर। सिंपल लेबर लिखा जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि वी हैव अ लेबर, और अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए टेक्नोलॉजी के साथ, या यूं आप कह दें कि अगर आपने लेबर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है, then you are converting it into the effective labor, तो फिर आप इसको effective labor के अंदर convert कर रहे हैं। इसको इस तरह में लिखा जाता है, दो अप्रोचेज हैं इसको लिखने की। वन इज y is the function of capital and then the effective labor, this is also known as Harrod neutral, इसको हम Harrod neutral के तौर पे जानते हैं। Another way is to multiply the whole production function with the with technology, and that is known as the Hicks neutral. With the production function, इसमें हम देखते हैं कि labor and capital are the rivalry goods that they cannot be used by multiple productions simultaneously. जो labor या जो capital आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर,
that is not being used by some other person या some other production process. जो production process जो आप production process में लगा रहे हैं, वो चीज़ जो है वो production factor of production या वो labor जो है या capital जो है that cannot be used simultaneously by other production processes. But technology and knowledge जो है they are not non-rivalry good, that it can be used by multiple producers simultaneously. कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी नॉलेज है, इसको आप कहते हैं कि ये नॉन राइवलरी गुड है, ये राइवलरी गुड नहीं है. That can be, and we also know that we have studied about the पब्लिक गुड्स प्रॉपर्टीज. हमने पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी पढ़ी है पिछली क्लासेस के अंदर, जिसमें हम उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पब्लिक गुड्स. वन इज कॉल्ड द राइवलरी एंड देन इज एक्सक्लूडेबिलिटी. सो दो चीज़ों के ऊपर बुनियाद करके आप कहते हैं. तो हम यहाँ पे ये फीचर पढ़ रहे हैं लेबर एंड कैपिटल का, कहते हैं द राइवलरी गुड्स एंड व्हाइल द टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इज द